Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, my name is Shreya Chitriv and I am a student of Siddhivinayak Coaching Institute from Standard 12th. Today I am here to explain you the derivation of pressure exerted by ideal gas. So firstly I give you the rough idea of this derivation. सबसे पहले आपको एक कंटेनर ले लेना है जिसमें पूरी आइडियल गैस भरी हो एंड देन उसका कंटेनर के वॉल्यूम का वॉल्यूम होगा Vx, जो x डायरेक्शन में Vx होगा, y डायरेक्शन में Vy होगा और y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में Vx होगा. ओके, सो लेट्स डिराइव द डेरिवेशन. Firstly a volume of the molecules is started on the volume of molecule in x direction is Vx, volume of molecule in y direction is Vy, and volume of molecule in Vz direction is Vz. Okay, so let's start. Firstly, the volume of this molecule is V, such as all the molecules are Vx, and in y direction Vy, and in z direction it's Vz. Okay, the any molecule moves its vector form is V bar is equals to Vxi plus Vyj cap plus Vz k cap. It's the vector form of the molecule, and as we all know, the gas molecules is moving in all direction. That's why we take the molecules moves in randomly. Okay, so Vx is equals to Vy is equals to Vz. Then we have to take its magnitude also. The magnitude it is the magnitude of this volume. Now as we see in Vx is equals to Vy is equals to Vz, so we have Vx square plus Vx square plus Vx square, 3Vx square. Okay, and then V square upon 3 is equals to Vx square. We give it its one equation number 1. Okay, then we have to find time during collision. जैसे हमको पता है एक मॉलिक्यूल है और वो अगर एक वॉल से टकराए तो हमें इसका टाइम निकालना पड़ेगा. द टाइम ड्यूरिंग कोलिजन इज, वी ऑल नो दैट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. distance upon
speed. The distance of the molecule travel from it is that firstly it's L, and when the time is equals to distance upon time, so its distance is L. बट अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है तो ऑब्वियसली है कि वो वापस भी आएगा, सो इट्स डिस्टेंस इज 2L and its speed is Vx. The frequency collision. We all know time is equals to 1 upon f. Therefore, f is equals to 1 upon time. टाइम हमने फाइंड कर लिया है, सो द फ्रीक्वेंसी इज Vx upon 2L. Frequency is equals to, then we have to find its magnitude, because we have to find its pressure, and we all know pressure is equals to force upon area, and force is equals to change in momentum upon time. सो इसका मैग्नीट्यूड जब ये वॉल से नहीं टकराएगा तब इसका मैग्नीट्यूड होगा mvx, और जब ये वॉल से टकरा जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड होगा -mvx, क्योंकि जब वॉल से टकराएगा तो इसका मैग्नीट्यूड निगेटिव में चले जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड पहले पॉजिटिव में था. डैट मीन्स इसका फाइनल मैग्नीट्यूड -mvx हो जाएगा और इसका इनिशियल मैग्नीट्यूड mvx हो जाएगा. देयरफॉर वी नो फाइनल माइनस इनिशियल गिव एज द चेंज इन मैग्नीट्यूड. Its final magnitude is -mvx and its initial magnitude is mvx is equals to mvx. Therefore, change in magnitude of an ideal gas is 2mvx. But the momentum gained by the wall is 2mvx, because here it is negative and the momentum gained by the wall is positive now. Therefore, 2mvx is a magnitude gained by the wall. Okay. Now हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है और हमें निकालना है फोर्स, और हमको जैसे पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम होता है. फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम होता है. देन now the force experienced by the wall of one molecule in one direction change in momentum upon time. So force is equals to 2mvx and by time is equals to 2L by Vx. As we seen in the derivation, it's and force due to n number of molecules. मतलब force experience किया है सारे molecule ने इस ideal gas के container में. Okay. Then force is equals to mass upon L और ये हमारा पूरे गैस का ये है. देन हमने इसको डिवाइड कर दिए n से और मल्टीप्लाई किए n से, और ये होता है हमारा रूट मीन स्क्वायर. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर, तो ये आएगा v बार स्क्वायर अपॉन 3. सो f इज इक्वल्स टू 1/3 mn बाय l इंटू v बार स्क्वायर. Then finally we have to find the pressure exerted by ideal gas. As we know, P is equals to F upon A. So we find the F
1 by 3 mn upon L V bar square upon A. So the L into A is equals to, V. Finally we find the pressure 1 upon 3 into mn by V into V bar square. Consider firstly here V is equals to root mean square. It is not a velocity, it is root mean square velocity. Okay, thank you.